हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज से मैं अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑब्वियसली दिस प्लेलिस्ट इज फॉर गेट 2027 एक्सपीरियंस के लिए, जहाँ पर मैं सेक्शन 1 to सेक्शन 10 का हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली दिस इज माय फर्स्ट डे। तो मैं आज जो है फर्स्ट टॉपिक प्रोपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, तो आज मैं इस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन उठाया है, जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है गेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। So before solving this question, first we understand some important topic. Okay. First is, what is the meaning of this? I simply copy it, now paste here. तो this is true जब हमारा P ट्रू होगा, Q false होगा. So Q is false. Okay. Now the vice versa is this. So I simply copy this. So here the opposite means true when Q is true is false. Okay. Now what is the meaning of this? So this is true when A is true and true and B is true. Okay, B is true. Now the last topic, that is what is the meaning of this here. So this is true when जब हमारा P अगर ट्रू है, P Q both is true है, तो फिर हमारा P Q both is false. Okay, so now I solve this question. बट सॉल्व करने के पहले हमको एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो टेबल का रोज कितना होगा, कॉलम्स कितना होगा। तो ऑब्वियसली रोज तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स है, P Q, दैट्स वाई यहाँ पर रोज तो 4 ही होगा। बट कॉलम इज फर्स्ट P Q मीन्स 2, देन दिस इज 3 4 5 एंड 6। सो हमारा टेबल का कॉलम होगा 6 एंड रोज होगा 4। तो insert a table 6 and 4 rows and header row. Okay, so here I first write P, then Q, then this, then this, then this. Now at the end I write this. Okay, so this is obviously we know that is true, false, true, false. So here you can see when the P is true, so P is true, Q is false. So here I write true. Okay, sorry, here I write false. Here this is false and this is false. Okay, false, and the other is true, so I simply write here true. Now QP, so QP here the vice versa, that is when the Q is true and the P is false. So I write here false and true and true. Now here you can see here true, so here true and here true. So here I write true and here I write true, and the false, it is false. तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन के लिए तो मैं कहा है कि दिस इज बोथ ट्रू या तो फिर दिस इज बोथ फॉल्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फॉल्स है, ये नहीं, तो यहाँ पर बोथ ट्रू है, यहाँ पर बोथ फॉल्स है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रू, अदरवाइज एवरीथिंग इज फॉल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि तो यहाँ पर हर एक का, तो यहाँ पर हर रो का वैल्यू सेम ही है, दैट इज ट्रू फॉल्स ट्रू। तो हमारा ये जो इक्वेशन है
तो obviously ये equivalent है. Okay, so hence is proved. I write it proved. Okay, now come to the second problem. So I write second problem. So here how many columns and how many rows are required? First is PQ2, then for these 3, then for these 4. Okay, and 5, 6, 7. So 7 rows, 4 column. So I insert here, that is sorry, that is 7 row, 4 column, 5. First I write it P, then Q, then Q, then this, now this, now this. So now the next is not Q, so I write that not Q, then here the final not P or not Q. Okay, so P true, Q true, true false, sorry, false true, and false false. Then P and Q, that is here true, otherwise everything is false. Not P and Q means false, true, sorry, true, true, true. Not P means false, false. Here then true, true. Then not Q means false, true, false, true. Then not P or not Q, that is false, false plus true, obviously true, then ट्रू. सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो कॉलम है तो बिल्कुल ही सेम है, तो दैट्स वाई हेंस दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड. सो आई राइट हियर, sorry, I write here proved. Okay, now the next question, that is check if P, Q and P is a tautology. So what is tautology? Remember that tautology is when the every value of the output is true, so every result is true. Okay, so now I create a table. So obviously 4 rows and 1, 2, 3, 4. So I insert a table, that is 4 column, 5 row, that is P, Q and QP, and this. Okay, so here true, 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 false, false, true, false, false. Now QP, here you can see our formula, that is false when Q true, P false. So here the Q is true here and the P is false here, so here I write false, then true, true, true. Same PQP means here P is true, P is true and this part is false. So further here you can see here true, sorry, true, 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 true means every result key obviously true. That's why this is tautology, so hence it is proved. This is our first video. See you on the second video. Till then, bye bye. Thank you for watching.